So, Paresh bhai, can we start? Yeah, I'm perfectly fine. Yeah, okay, no issue. So, first of all, thank you everyone for joining the today's meeting. So, good afternoon, everyone. So, let me introduce myself. So, myself, Gaurav Mishra. I am also the part of this audit committee, nominated member. And the today's seminar is on the internal audit study group, which is jointly organized with ISA and FAP study group meeting. The topic is going to be a very good. The topic is very good, and the speaker is also quite good. So, without being late, let me just introduce Paresh Bhai. His, if I'll start giving his introduction, I think it will take at least more than 5 minutes. But yes, as a as a member, I will start and introduce him. So, good afternoon, Paresh Bhai. So, Good af- Paresh Bhai is the faculty. Paresh Bhai is the faculty at ICI for Advanced ITT, DISA, and topics on the information technology. He's also the faculty of GST at ICI from May 2017. Apart from this, he is also associated with the GST department where he takes session on the forensic audit, GST, and excise and service tax. Apart from this, he is a corporate trainer on the international trade, setting up business in India through inbound investment, indirect tax management, costing, and operational research. Apart from these things, the major area of his practice is Power BI, Zoho Analytics, data analytics using Excels, forensic and information system audits, bank audits, IFC, and India's implementation. Also, the Paresh Bhai is currently heading UK-based MNC Sachi India's operation as head of finance, IT, and system control. So I think the topic what we have selected, I think we are going to get a lot of benefits from Paresh Bhai. Thank you, Thank Paresh you. Bhai, for accepting our invitation. Now over to you. Yeah, thank you. Thank you, Gaurav. And both the study groups. I'm a member of both the study group and happy to share my thoughts on this. I was not aware how to take up, but I thought let us be in the flow and as in all of my friends only from the study circle, so we can discuss amongst ourselves. Nobody is a faculty, nobody is a student. We all are actually student of information technology and audits. So let us start with me with the I'll just start my PPT. Is my screen visible to you? Yes, clear. Yeah. And I'm just trying to scroll it. So that is also working at your screen. Yeah. Thank you. Thank you. Perfect. Thank you for giving thumbs up. And first of all, let me thank both the study groups to invite me and to share my thoughts. I may not be a proper faculty per se, but I'm trying to learn from each one of you and trying to deliver the best of my ability. And the way it is like both the study groups have joined hands together. So I thought better to have those starting slide itself in joining hands together, the internal audit group and our DAA, ISA and FAFP group. And begin is like, but I was not aware how to take up this. In fact, both the study groups organizers were a little worried because I had underwent a dental surgery and Bhavin Bhai was always asking me, Paresh Bhai, will you be able to speak? Will you be able to speak? But by God's grace, from this Tuesday onward, I'm able to speak and hope the pronunciation might be improper in between, but please bear with me. Don't mind, you'll be able to get it through easily now. And what I've designed is the PPT, which is like a story, narrating a story to you all. And we all are the, what you say, a participant in the story. And we will all try to derive what are the controls to be implemented or where the controls have to be implemented. Okay, so I don't think that I know something better than you or you know something better than we all are at par. We all are chartered accountants. So we are having that kind of qualification to work upon it. Some areas I might be good, some areas you all might be good. Okay, we can all disseminate our skills and get along with it in a very nice way. So to begin with, I always try to give the credits to all the people who are instrumental in deriving it. And some kind of a disclaimer also that I have taken many things from the internet materials from public domain, CDEC, CERTIN. Okay, so all these things we have to keep giving the credits to them. And special thanks to obviously 4 group members of
both the study groups. And as I said, the fact sheet. So this is like, see, I am not the speaker itself because this is a study group. It is not like a one-way communication. You all are free to talk and participate. And what we have arrived here is IT controls in a professional, small and mid-sized professional firms. So a live example, I'll just remove the names of that firms and all that. I'm trying to give solution as an IT or an internal audit or an audit person. Okay, how to get the things best out of the any of the firms. This can be a professional opportunity also. This has become a professional opportunity for myself, and it is giving me a good business. It is not a compliance practice per se. I'm not into any kind of a, what you say, a traditional role or a traditional practice. As you must have seen, Gaurav Bhai has given my introduction, and it is completely a different kind of practice which we do. So we just met a few of the firms, and then they gave the introduction as a professional firm. We are the professional firms of a chartered accountant, and activities mainly are divided between two teams, like a audit team and a tax team. Majority of the firms will be having this kind of setups, whether it is a small firm of a 2 partners or a 10 partners or 20 partners. You can, what you say, you can extrapolate the data and you can build upon it. So what they say is like, we are a 6-partner firm. So there are 2 heads in the audit department, 2 heads in the tax department, and 2 heads in the normal administrative and the business development or the collection and the revenue parts. And 3 managers, audit, 3 managers in tax team, like AM1, AM2, AM3, okay, and go up and down, all these things. Then they have some kind of trainees and the semi-qualified staff, like 20 to 25 people team size. And they say that this keeps on fluctuating, and it is a fact that this can keep on fluctuating. Whether it is an examination or something, then obviously they go for a leave, and then when there is a season, then they come back. And then there is an accountant, which is R1, which is denoted by R1. I just removed the names. Other admin staffs, which supports to all the 6 partners, and all may or may not have the computer requirement. And there is also a 3rd department, which this is the live things which I have conducted during the COVID pandemic, and that I am sharing with you all. And there was another department which we never knew कि ऐसा भी कोई department इनके पास है, होता होगा, लेकिन इन्होंने in-house ही रखा था ये. There is a CS department where there are 3 people all working, 2 proper company secretaries and 1 semi-qualified, and others are training in that department. And you can see it's a mid-sized firm, 1500 client है इनके, and the individual partnership, charitable companies, whatever, all mix are there. And they do audit, they do tax, they do accounting, they do advisory. So whatever big things, big names we tell of services, everything they give. It's a reasonably sized, around 30-year-old firm. And the groups which they have created, all related files of groups are classified under the main group, like Gadiali. So Gadiali group will be coming under Gadiali group. Murtuza Gadiali's individual file will be there. Under that, Murtuza and Murtuza associates will be there. That way, partnership firms. All this under group, each client names. For each client, there will be an assessment year or a financial year wise folders have been created. In each assessment year, different folders like accounts, audit, whatever is applicable, like PT, sales tax, VAT, GST audit, whatever. So the task-wise folders were created. Assessments were created, penalty proceedings, reassessment, appellate, ITAT, High Court. Up to High Court, they are used to practice. So this kind of a firm, you will be able to correlate with your own firms also. So these were these are all things when we started meeting the firm was not aware कि ये सब हम लोगों को बताना पड़ेगा कि कोई हम लोगों को सर्विसेज देने को आ रहा है तो उसको क्या-क्या बताना पड़ता है. We started meeting the management, the senior partners of the firm. जब उनको पूछा, there were partners who were 60+ years of age, there were partners who were in their 40s and 50s, and there were partners who were just 30+. So ये 6 partners में ऐसा combination था. So we all are going through different times, and they wanted to understand how the workable solution can be arrived for work from home also, and they can provide the services to their clients. And then we started stating that नहीं भाई आपको document करना पड़ेगा, each and everything you need to document as an IT resources, IT infra,
और IT नेटवर्क आपके पास क्या है एग्जैक्टली वो आप हमको बताइए. So for making these things, this also we charged to that particular client, and we earned into that by noting it down कि क्या है क्या नहीं है. Like then they came up with हमारा सर्वर ऐसा ऐसा है, IBM सर्वर 12 है, 16 GB RAM, blah blah blah, hard drive, active user directory है 20 plus with 5 CAL license, 12 computers in office, 8 office laptops, and C plus और minus 10% हम समझ सकते हैं कि वो बताना भूल गया, कुछ भी हो गया. But majority this kind of a setup works around. All license antivirus है, हमारे पास सारे licenses है, कोई problem नहीं है. Our domain is with G Suite and 50 users का license लिया हुआ है. ये सारी चीजें हम लोगों को noting करनी पड़ी before understanding the requirements from their side. Then 2 Wi-Fi at both the offices. So in a same building they were having 2 different offices. एक फर्स्ट फ्लोर पे थी और एक फिफ्थ फ्लोर पे थी, ऐसे उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था. एंड प्रिडोमिनेंटली दे वांटेड कि टैक्स टीम ऑडिट टीम से बात ना करे, ऑडिट टीम टैक्स टीम से बात करे. सो दिस वाज द स्ट्रक्चर. 2 Wi-Fi at both the offices, 2 Wi-Fi. So that means first floor, fifth floor, 2 Wi-Fis each. Total 4 Wi-Fis. The static IP address from Tata Docomo. ये Tata Docomo की सर्विसेज ली थी उन्होंने. एंड रफली डेटा साइज ये सब क्वेश्चंस हमने दिए थे उनको, पूछे थे कि भाई ये क्या है आप बताइए हमको. नाउ यू टेल अस व्हाट इज देयर. ओके, आईटी कंट्रोल्स करना है तो पहले समझना तो पड़ेगा व्हाट आर द रिक्वायरमेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट दे आर. ओके, ये हर एक ऑफिस का डिफरेंट सेटअप होगा. अगर सिंगल प्रोप्राइटरी फर्म है तो उसका सेटअप दूसरा होगा, 2 पार्टनर्स डिफरेंट, 4 पार्टनर्स डिफरेंट. ओके, व्हाटएवर. Our data size is 800 GB. The data may be of 10 years, 15 years. In some cases, it might be 20 years plus. Out of this, we can put only 3 years data in working folders, either on cloud or on separate bifurcation or in in-house server. The size would be around 300 GB. Other data on need basis, we can put on cloud or separate bifurcation as the case may be. So these are now अभी उनका जैसे हम डिस्कशन करने लगे तभी उनको समझ में आने लगा कि अरे आपको ऐसा भी करना पड़ेगा, हमको ऐसा भी करना पड़ेगा. We have to take this. A little bit of Hindi, English is fine with you all. Can you give thumbs up or something? English, Hindi is fine. Rashtriya Bhasha. Yeah, thank you, Rahulji. Thank you, Rahulji, for confirming. Thank you, Rohan. Yeah, thank you. Thank you, Sumit. Yeah. So they use predominantly. Abhi sir, ये मैंने tally. See, it's a study group, so I'm openly writing the name of the software which we all use it in our offices. Tally है, जो कि basic accounting के लिए use होता है. Winman for tax, Winman for TDS, then Web GST for GST filings, EM signer tools, digital signature tokens, return filing, generalized software, office suites, WPS जिस कंप्यूटर पे MS Office लाइसेंस नहीं होगा उसके ऊपर ये यूज करेंगे. एंड डेफिनेटली द Acrobat, which are the PDF files for viewing 26 AS, AIS, TIS, whatever. And we have tried to draw our. See, now they understood that अभी हम लोगों को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मिला है जिसको थोड़ा बहुत कंप्यूटर समझता है, तो उसके साथ बात कर रहे हैं. तो हम लोगों को कुछ अच्छी तरह से प्रोफेशनली मैनेज फर्म बननी चाहिए, तो वहां पे जाना है. तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा. सो वी हैव ट्राइड टू ड्रॉ अवर विश लिस्ट एंड अ स्टेटमेंट ऑफ विश लिस्ट मेनली फ्रॉम टैक्स टीम. That is enclosed, that I'll show it to you. We want to bifurcate the whole data among various managers in such a way that whether they are working from home or in office, data relevant for their work is available to them, and at the same time they don't have access to whole thing. That means full data of a single client is not available. So this kind of what you say requirement list keeps coming. The user, what you say, user requirements कि user हमको ये बता रहा है कि हमको ये चीजें चाहिए, हमको ये करने की उम्मीद है, आप हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं. हाउ डू यू एबल टू हेल्प मी आउट दिस विद द टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस एंड हाउ टू इंप्लीमेंट दोस एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड उसका टाइम फ्रेम क्या होता है. ये सारी चीजें ऑब्वियसली वी ऑल डिस्कस दिस. एनी प्रोजेक्ट वी टेक अप एज अ मैटर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी टेक प्राइड कि कोई भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं आपके पास, हम उसके प्रोजेक्ट का प्लानिंग करके देते हैं. इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, pre-investment planning stage होता है, okay, and operating stage चालू होता है. Then we start generating the operating profits and how it can sustain over a period of 5, 10, 20 years. Okay, that way. So this was given to me as a task, and you can see this that among everything else, secrecy of data is our
major concern, as our data is client's data and we are under an obligation to, obviously ये साइज की फर्म है, तो peer review firm भी थी, listed entities भी थी उनके पास, तो data has to be absolutely secret. All possible avenues of leakage need to be closed. मतलब वो होता है ना, absolute assurance तो नहीं होता, लेकिन reasonable assurance तो लेना पड़ेगा. Okay, Paresh, you have to give me reasonable assurance. I'm just seeing in chat something is happening. Yeah, okay. Yeah, Manishi, thank you. Okay, happy to see you in a chat box also. Good. Even I feel that we all are actually participating in a talk. So should we go for a cloud? This kind of questions come. So this question is not for me. This question is actually for you all. Okay. So don't think that Paresh is going to give you answer. Answer we all will try to arrive at. Okay. And then we'll learn IT controls by this means. By 6 o'clock, at least we will be able to reasonably secure ourselves. It made some sense. Okay. And if I'm not able to deliver, then see, first of all, bringing me here, thanks to the office bearers and the core group members of both the committee. But if I'm not able to deliver, you can always blame one person, and that is my dentist. Thank you. What type of cooling arrangements? Acha, now, should we go for cloud computing or we substantially upgrade our existing servers? क्योंकि उन्होंने पहले बताया था कि हमारा 2012 का सर्वर है, IBM का सर्वर है बड़ा वाला, and that was a tower type server. Tower type server जिसको नहीं पता, जो पुराने जमाने में जो CPU आते थे, सब डब्बे जैसे कुछ कंप्यूटर दिखते थे, तो वो टावर टाइप सर्वर था उनके पास, IBM का था, which was a very much workhorse. They never used to put it on off mode at all. Non-stop चलता रहता है. Okay, वैसा सर्वर. We will need a minimum 25 user IDs, ideally 30, and going forward in next 2 years. मतलब उनका प्लानिंग भी प्रॉपर था, वो सब हमने इनसे पूछ लिया था, बैठ के मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करके ये सब चीजों में अराइव हो गए थे कि भाई आपके अभी कितने हैं, आगे क्या चलेगा, मतलब 6 महीने में क्या होगा, 1 साल में क्या होगा, 2 साल में क्या होगा. This everything the information we capture. So 40-45 उनका प्लान था कि भाई ये तरह से बिजनेस ग्रो होगा, then we will be around 40 to 45 people size in a firm. What type of cooling arrangements required for in-house server? अभी आप लोगों को सबको पता होगा, we all are having a small kind of a CA firm. Okay, so during this COVID phase, right from I think March 2020, I think we all have come across that thermal imaging scanner, correct? Have you all come across this thermal scanner? Mutsu sir, participants can only write in the chat box. Then also it is fine. Yeah, they can unmute themselves as well. Acha, they can unmute. Okay. Yeah. So we all have seen this thermal scanners, right? So thermal scanner हमारे यहाँ पे forehead पे लगा देते, कभी हाथ पे लगा देते और हमारा temperature check करते हैं. But are you all aware that even the computers needs to be in a certain temperature limit? मतलब उसको ये मत बोलो कि वो डोलो 650 दे दो उसको, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, but it has to be for performing it has to be during a temperature range. If it is a high-end server, then 18 to 22 degrees temperature में centigrade में होना चाहिए, and then it can perform with all the what you say hardware inbuilt and give the performance at fullest speeds and all. So ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, हमने सबको देखा हुआ है कि भाई थर्मल स्कैनर हम यूज करते हैं, बट उसके अंदर 2 मोड होते हैं. वन इज द you can a body, the body, and there is another mode, object. So if you are not using it now, तो अभी आपके कभी आपके जो भी सर्वर होगा ऑफिस में, just try to pinpoint as a object and try to take a temperature of your computer server. जहाँ पे भी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि वो सर्वर ही होगा पर से, कोई हाई एंड डेस्कटॉप को भी सर्वर बना देते हैं, करेक्ट? तो उसको आप कभी ये करिएगा और आप ट्राई टू नोट कि कितने टेम्परेचर पे चल रहा है. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, बेसिक से. ये आईटी कंट्रोल, दिस इज वी आर एंटरिंग इनटू आईटी कंट्रोल्स. सो सबसे पहले तो कंट्रोल हो गया टेम्परेचर. फिर टेम्परेचर कहाँ है, वेयर इट हैज बीन प्लेस्ड, द लोकेशन, whether it is absolutely kept near the door, the main door, or it is kept inside the
एब्सोल्युटली लॉक एंड की टाइप ऑफ जगह जहाँ पे वेंटिलेशन भी नहीं है, वहां पे रख दिया है आप लोगों ने, करेक्ट। तो ये सारी चीजें उनको भी क्वेश्चंस आ रहे थे, तो हम लोग ने बोला क्या टेम्परेचर अरेंजमेंट है, कूलिंग अरेंजमेंट की क्या है, आपके पास ड्यूली वेंटिलेटर है, एग्जॉस्ट फैंस है, एयर कंडीशन है, तो कितना ऊपर है, कितना नीचे है, डायरेक्ट फ्लो आ रहा है, नहीं आ रहा है, ओके। सो दिस आर ऑल थिंग्स व्हिच वी मे हैव लर्नड इन द टॉपिक कॉल्ड इसका। इसका में ये सारी चीजें बहुत आती थी, and even in our information systems audit, so many things have been come, and many people must have already qualified as a information systems auditor because we have a joint session of both the study groups. So then the question came, what would be estimated one-time cost and recurring cost of each options? Obviously, whenever we suggest some kind of a solution, ये चलिए अभी आपको प्रोग्राम लेना है, आपको टैली लेना है, अभी आपके पास 4 जन की टीम साइज है, तो आप बोलेंगे टैली में सिंगल यूजर तो नहीं ले सकता, आई हैव टू गो फॉर अ टैली मल्टी यूजर लाइसेंस। टैली मल्टी यूजर लाइसेंस ले तो लिया, 1 साल के लिए उसमें अपग्रेड्स भी फ्री है, then what we do, every year we have to keep on renewal, so the one time cost and there will be a recurring cost. So any IT infra, IT controls, it will have a one time cost and a recurring cost. And how do we structure data access to trainees, which specifically in chartered accountancy firm, we have always seen that normally the article trainees are being hired and those are given live data to work upon. Ours is the only and only industry where surgery takes place, open heart surgery takes place on the live client or a live patient. Okay, dead bodies पे नहीं होता. Medical profession, due respect to them, but they also perform their surgeries, their kidney transplant or whatever, blah blah blah, on the dead bodies. Okay, they don't touch the live data. हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि ट्रेनिंग्स को हम लोगों को लाइव डेटा देना ही पड़ता है, उनको उसके ऊपर काम करना ही होता है, and that's the way how they learn after 4 years of constant learning and training. They also become capable to handle the data on their own. So how to structure the data? They are not assigned to any head or managers, or team can give access. मतलब कैसे दिया जाए उनको? Because these people are keep on coming. मतलब अभी 3-4 महीना काम किया, बाद में एग्जाम्स के लिए जाएंगे, 2 महीने की छुट्टी के बाद वापस आएंगे, वापस एग्जाम देने जाएंगे, तो उनके लिए ऐसे कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट नहीं होता, जब भी अवेलेबल है, जब भी ज्यादा लोड है, उनको काम दे दिया, करेक्ट। तो वी ऑल आर ऑन द सेम पाथ। जो मैं बात कर रहा हूँ, इट मेक्स सेंस टू एवरीवन। You can put it in the chat box. I'm focusing on that also. You can put it on the WhatsApp groups. That is also in front of my screen. So yeah, thank you. So what type of restriction we keep on mails? Like, do we go for Outlook or do we go for a Gmail? I mean, Outlook, for my friends from the other study group, like ISA FAFP study group and internal audit study groups, both will be aware. Outlook and Gmail are the two service providers as an emails for any corporates. मतलब Outlook, Microsoft का Outlook लिया होगा हमने, या G Suite, दो Gmail प्रोवाइड करना है, करेक्ट। सो दोनों में क्या डेटा प्राइवेसी है, क्या डेटा प्राइवेसी लॉज है उसके, एंड हाउ डेटा कैन बी सिक्योर्ड. Is there any way to restrict the downloads from the remote desktop server or cloud server to local computers? See, when we host our data on the cloud server, and sometimes we also need to go for a BYOD. BYOD is a term called bring your own device ka short form hai. And this has been used to bring your own device. Okay, so here the person joining the organization, they bring their own device. First, it gives you an added advantage of not having a capex initially for hiring the resource, and at the same time, the misuse or the abuse to the company's asset is also not there. If it's an intern or that type of person or a trainee, then definitely BYOD, by strict controls on their access and everything, we can definitely safeguard the assets of the professional firms. Okay. So these were the questions. And do we need a dedicated firewall on our office servers, or else installing VPN can act as a firewall? Okay. ये questions, are you able to correlate? Just give me some kind of feedback. ये virtually session में ना एक ही चीज का difficulty होता है. Ease तो बहुत है, but the amount of
eye-to-eye connect, which we get in a physical sessions, that we don't get it over here. So even a thumbs up from anyone or a yes or no from chat box will definitely give us. मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि monologue. Yeah, thank you, Mishra ji, Gaurav Mishra ji. Yes, good. Yeah, thank you, Muthu. Yeah, thank you. So at least I feel that I'm talking to people. Okay, yeah, thank you. And so, what is the backup solution on the cloud? क्लाउड पे एक बार डेटा डाल दिया तो मतलब पीस ऑफ माइंड है हमारे लिए. क्लाउड पे चला गया तो हमारे सर्वर का डेटा सारा क्लाउड पे डाल दिया तो पीस ऑफ माइंड है. राहुल जी नमस्ते, थैंक यू फॉर कीपिंग योर कैमरा ऑन. सो आप आंसर कर सकते हैं इसका सर. क्लाउड पे बैकअप डाल दिया, सारा डेटा हमारा फाइल सर्वर का डेटा सारा हमने क्लाउड पे चला दिया. सो नाउ हम लोग पीस ऑफ माइंड हो गया हमारे लिए. कैन वी गो एंड से दैट यस we have completed our backup solution also? Is that so? Murtaza, you can also answer. बहुत लोगों को ये हम लोगों को because when we sit together we try to brainstorm sessions like this, study groups. वहां पे हम लोगों को ऐसे सोचने में आता है अरे यार क्लाउड पे डाल दिया है तो अभी क्या करना है. हाँ देखिए सुचेता, टेंशन इंक्रीज्ड, multiplied the risk. Okay, great. Thank you. So cloud पे जाने से problems बढ़ते हैं, कम नहीं होते. Okay, good. Okay. Appreciate. If we provide our office laptops to staff, what kind of restriction can we incorporate on it so that data loss is limited or eliminated? See, these are the general clients. आप समझेंगे कि ये कोई अनपढ़ लोगों के पास से आ रहा है. No. It's a professionally managed, peer-reviewed firm. उसके पास से ऐसा डेटा आ रहा है. मतलब questions when we try to sit with the senior level people, the senior managers also, and the partners of the firm, who were few of them, two of them were the founding partners. Other partners then joined and all that. तो एक ऐसे questions इसमें से बन के आते हैं कि हम लोगों को भी लगता है अरे यार ये तो सोचा ही नहीं, ये भी सोचना चाहिए था, इसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया. ओके, द सेम वे कि भाई हमने क्लाउड पे डाल दिया तो हमने टेंशन भगा दिया, लेकिन टेंशन भागता नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाए. ओके, सो एक्टिव यूजर वाइज रिस्ट्रिक्शन ऑन फोल्डर्स एंड सब फोल्डर्स फॉर एक्सेस अ पर्टिकुलर फोल्डर अप टू फाइल लेवल. मतलब अगर मैंने एक फाइल फोल्डर बना दिया परेश पांचाल, अंडर दैट आई हैव 5 years. अभी ये एग्जांपल के लिए अंदर वहाँ पे 3 years का डेटा लाइव रखते हैं. मतलब एक करंट ईयर का डेटा 22-23, उसके पहले का 21-22 और उसके पहले का 20-21, क्योंकि ज्यादातर असेसमेंट लगभग कंप्लीट हो गए होते हैं. ओनली इन द केस ऑफ लिटिगेशन फाइटिंग्स, दैट टाइम यू कैन सी दैट वो अपीलेट और सीआईडी अपील है, हाई कोर्ट है, उसके अंदर वो सारे फोल्डर्स होते हैं. अदरवाइज जनरली फॉर ऑल द क्लाइंट्स यू कैन से 80% ऑफ द क्लाइंट्स 3 साल का डेटा है, इट इज मोर देन सफिशिएंट. सो 3 साल का है. सो परेश का डेटा फाइनेंशियल ईयर 22-23 का मुझे पर्सन एक्स को देना है, या उसको 2 साल का डेटा देना है, या पूरा फोल्डर के अंदर जो भी कंटेंट है 3 साल के सारे दे रहे हैं. वो हाउ इट वर्क्स, हाउ टू अराइव दोज कंट्रोल्स, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू अराइव एट द सॉल्यूशन. ये ऐसा हो भी सकता है. ओके, परेश का फोल्डर मैंने शेयर करके दे दिया. अभी परेश तो पहले मेरा कंप्यूटर ऑफिस में था. ऑफिस में तो मेरा एक बड़ा सा कंप्यूटर था, उसके अंदर मैंने हमारे हार्डवेयर इंजीनियर ने बोला था कि सर आप एक काम करो, एक 2 TB का या 4 TB का हार्ड डिस्क ले लो, और एक 4 TB का हार्ड डिस्क ले लो, उसको मैं मिररिंग कर दूंगा, और आप है ना एक पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी ले लो, उसके अंदर वो डेटा का बैकअप रेगुलरली करते जाना हर हफ्ते. ओके, तो आपका डेटा का प्रोटेक्शन हो जाएगा. ओके, तो इस तरह से लोग कहते थे और वो राइट था. दैट जेंटलमैन वाज एब्सोल्युटली राइट बाय आस्किंग योर क्वेश्चंस का आंसर देते हो, वो एकदम करेक्ट था. लेकिन वो डेटा स्टोर हो रहा है नहीं हो रहा है, डेटा बैकअप प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ है, उसको टेस्ट कौन करेगा? वो हार्डवेयर वाला सॉल्यूशन वाला तो करने आएगा ही नहीं. करेक्ट, ही विल नॉट अंडरस्टैंड कि आपका डेटा कितना इंपॉर्टेंट है. आपने जनरल उसको स्टेटमेंट दे दिया, अरे भाई मेरा ना पिछले 5 साल का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, और समझिए आपका 6 साल के पहले या 7 years के पहले वाला डेटा, जिसके अंदर आप हाईकोर्ट में गए हुए हो अपील के लिए, या आप आईटैट में गए हुए हो अपील के लिए, वो डेटा बैकअप हो ही नहीं रहा है, एंड सडनली दैट डेटा हैज गॉन.
inaccessible. So what will happen? आपने जो भी वर्क किया रहेगा by studying all the case laws, studying nights में बढ़ के उठे case laws डाउनलोड किए होंगे, उसके बैक वर्किंग होगी, उसके ऊपर आपने आपका ड्राफ्टिंग किया होगा, तो सारी चीजें it's gone for a toss. Okay, so as a person, all I can see Prasad Sagar ji also. Thank you, sir, for joining the session. And all this hard work which goes into it, it gets evaporated. I'm not touching upon the cyber security part or all that. तो हम लोग बाद में देखेंगे. ये तो this is just the basics what we are actually understanding. कि भाई electricity क्या होनी चाहिए, temperature कितना होना चाहिए. UPS पे भी आऊँगा मैं, मतलब how to protect under. मुंबई जैसे शहरों में ऐसा नहीं होगा, but at least राहुल जी मुझे बता पाएंगे कि शायद नासिक में कभी-कभी लोड शेडिंग का इश्यूज आते हैं. And people नहीं आते अभी. Great, I'm happy. चलो great. तो वो solve हो गया problem. Otherwise, we have seen in the mountainous areas, we have seen that electricity नहीं होती है. I have personally gone into for the bank audits and I have seen वो Naxalite area था. तो Naxalite area में morning 9 to 6 electricity नहीं होती है. 9 AM to 6 PM. मतलब generally जो banking hours होते हैं ना 9 to 6, electricity is not there. Why? So that people are मतलब शांति में रहे उसके लिए. आप सोचिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते, एंड देन वी हैव टू वर्क ऑन द जनरेटर, आस्क फॉर द डीजल, ओके, एंड देन वर्क. तो ये सारी चीजें भी एरियाज में होती है, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं. नाउ यू कैन सी दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन इम्प्रूव्ड एंड थैंक्स टू द डेवलपमेंट्स एंड थैंक्स टू कोविड आल्सो दैट पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. एटलीस्ट हर एक ऑफिस में 2 इंटरनेट होता ही है, 1 फुल टाइम इंटरनेट the lease line or whatever, and another is a standby like a Wi-Fi devices on a portable hotspot device. You can take 10 connections to the 10 devices. So yeah, and what will be the time frame from implementing either of the options? मतलब ये सारे options आप देखेंगे तो उसके लिए क्या क्या समय जाएगा आपका? How much time will it be taking? Then they say that do we need to take a full-time or a part-time person? अभी ये सारी questions अभी when we try to brainstorm, उनको बता दिया कि भाई आपने तो हार्डवेयर तो implement करवा दिया, आपके पास एक अच्छा बंदा था, he was a good hardware resource person and he has given you all these things, but then they understood that it will not work, so they came up with the things that full-time और part-time person होना चाहिए मेरी ऑफिस में. हमारा जो around 30-35 का staff है strength, to monitor all this easy workflow for taking care of our hardware, network infra, confidential data, and many more. Then data transfer to trainees, मतलब उनको कुछ data देना है काम करने के लिए, and then from old data bank to the server, new data bank, मतलब shifting of data. Then actual data transportation from physical server to the cloud and change from one drive to another drive. Sometimes you feel यार Amazon का web server अच्छा है, माइक्रोसॉफ्ट इतना अच्छा नहीं दे रहा है, काम स्लो चल रहा है, या जी सूट में या जी ड्राइव में, गूगल ड्राइव में उसमें इतना अच्छा नहीं परफॉर्मेंस है ना, आई जस्ट हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वन टू अनदर. देन हाउ टू गो अबाउट इट? देन another software which we use, the majority of the software which we use, how those can be taken up on the server. Abhi to now post COVID, it is very easy now. We just have to have a Tally on cloud. Tally itself gives the solution by their channel partners, that you can straight away go to them and ask for per user licenses, and they can migrate your entire Tally licenses to the cloud, and you pay a monthly pay fees and you get your data. You need not install everything on your local server, and those things are also people are now fine with it. Initially they were having various glitches. Licensing कौन देखेगा, विंडोज का लाइसेंस कौन देखेगा, कितने वर्क स्टेशन हो गए, कितने यूजर्स हो गए, हर एक यूजर्स के पेपर लाइसेंसेस किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो व्हेन दे ट्राई टू ऑडिट ऑल दिस थिंग्स, पीपल कम टू नो कि अरे यार ये तो प्रॉब्लम है, हमने तो खाली हार्डवेयर के लिए लाइसेंस पे पैसा दे दिया, अभी सर्टिफिकेशन का कॉस्ट कौन देगा. ओके, ऑल दिस थिंग्स कीप ऑन कमिंग. एंड देन अनदर थिंग्स लाइक करंटली 6 यूज हेड्स, जैसे मैंने 6 पार्टनर्स बताए थे ये फर्म के, and they use independent email ID like Paresh at pareshpanchal.com. Okay, and rest all managers and trainees use common office email ID for correspondence. मतलब tax team का एक tax का email ID होगा,
ऑडिट टीम के लिए एक ऑडिट का आईडी होगा मैनेजर वाइज, and is that a correct practice or not? That is also what the question which came up. Is it the correct practice? Then what is the better option for mitigating this type of weaknesses? And if everyone is given, अभी इसमें ये भी आता है कि चलो सबको दे देते हैं, सबको दे तो दिया, बट अभी इसको कंट्रोल कैसे करें? हर एक यूजर को एक एक ईमेल आईडी दे दिया, तो हाउ टू कंट्रोल? पता चला परेश एक नोटोरियस एम्प्लॉई है अपने ऑफिस में, उसको परेश पंचाल मतलब paresh@xyz.com बना के दे दिया, एंड देन उसको जो भी ईमेल आता है उसका तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करता, तो हाउ टू टेक केयर ऑफ इट? सीसी कैसे मार्क होता है कि परेश का रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है, परेश का अल्टीमेटली रिपोर्टिंग पार्टनर कौन है, मतलब मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर का रिपोर्टिंग पार्टनर होगा या सीनियर पर्सन होगा, और सीनियर पर्सन के ऊपर रिपोर्टिंग पार्टनर होगा। तो ये दिस काइंड ऑफ हायरार्की व्हिच वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, डिराइव एंड देन implement it. So are we all together at this background or basics when the questions started coming to you? Have you all understood all these questions? Thank you, Rahul ji. Thank you. So thank you, Vandana ji, for joining. So अब समझ रहे हैं ये सारे questions आ रहे हैं कि भाई करना क्या है. See, everyone is aware about this. So how to give this kind of solution? So you all are there with me, और आज मेरे पास काफी सारे brains, fertile brains है, तो let us make use of those brains, and we have a good number of people. Paresh तू होए तो मुझे हमारे से चिंता है. Thank you, Vandana. Thank you, Vandana. Yeah. Okay. So we have good number of people around here. So let us understand how to give this kind of solution to any client. Okay. I think there is something which is stuck right now. Give me a moment. Of late, we are using VPN instead of cloud. Virtual private network we have created in our office. We are at comfort zone, you know. But only thing is that server you need to take care. If you want to work in the night, then you keep on the server. Else, by the end of the office, you are end of the database. You know? Vandaban, thank you very much for bringing this to my notice. Very nicely put across. So server आपकी office में है. Server is located in your office premises. So it is on-premise server. Okay. So on-premise server, you have to take care of all the things which are there in your office: the electricity, the air conditioning, the uninterrupted power supply like UPS. Okay. Even the internet bandwidth that have to be taken. If you have taken one, then you have to decide on what will be your alternate. If it is the first line gets dropped, and then the connectivity, and somebody has to be in the office to at least switch it on or switch it off. Correct. At least to monitor all these things. Generally, I have seen this kind of practice in all the mid-size and small size CA firms, that they don't take it everything on the cloud. Rightly so. See, this is each one has a different kind of a solution to their own problems, and we all try to find out the solution. Correct. And I will be very honest with you all that we all have seen work from home, but unfortunately the problems with me personally, I've gone through so many times. I have to work from home. I have 2017 when got a bed rest for 6 months. So I got a, what you say, थोड़ा ट्रेलर पहले ही देखने को मिल गया था मुझे कोविड का. सो आई स्टार्टेड डिवाइसिंग ऑल दिस स्ट्रैटेजी कि कैसे किया जाए. मैं अभी ऑफिस तो जा नहीं पा रहा हूँ फिजिकली, एटलीस्ट इनफैक्ट मैं वॉशरूम तक नहीं जा रहा हूँ, तो ऑफिस तो दूर की बात है. हाउ टू एक्सेस दोस डेटा, हाउ टू टेक केयर ऑफ द डेटा, द कंट्रोल्स, देन डेलीगेट द वर्क टू अवर जूनियर पीपल. अपने स्टाफ के साथ साथ अपने पार्टनर लेवल पे भी होता है कि भाई ये काम मैंने कर दिया है, चलो मैंने जीएसटी देखा, अभी आपको इनकम टैक्स देखना है, यू हैव टू फाइनलाइज योर all these other things. So how to take care of all these things?
On premise is very nice. It's a best way, I can say. If you can manage in-house, nothing like it. Or control pura apne haath mein hai. Correct. When we give data to somebody on a private server, there are costs associated, there are benefits also. And I've seen both the sides. कि भाई 20 के बाद तो इतने लोगों ने प्राइवेट सर्वर करने के बाद खुद का सर्वर कर दिया, बहुत लोगों ने प्राइवेट सर्वर खुद का सर्वर करने के बाद प्राइवेट सर्वर पे चले गए. बोथ द वेज वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ थिंग्स. एंड लाइसेंसेस वहां पे लोड करो, वहां से लाइसेंसेस निकालो, फिर अपने सर्वर पे लेके आओ. एंड ऑल दिस थिंग्स दो, इट टेक्स अ tremendous amount of time, energy, and a professionally chartered accountant, all these people, if they start doing all these things, तो एक बहुत तकलीफ का सिनारियो हो जाता है कि client requires everything yesterday. We are doing the work today and we'll be able to deliver tomorrow. So client is always on their toes. और उनके पास तो इतने सारे tools हैं, because they just come to us and they say, हाँ इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है. अभी मैं ये लेना चाहता हूँ, आप ठीक बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, बता दो. Means all these things we keep on doing. मैंने एक ऑफिस के बाहर देखा था, keep your shoes and Google knowledge outside. और मुझे इतना अच्छा लगा था वो देख के, मैंने बोला keep your shoe तो ठीक था, अभी Google knowledge outside. And that was a law firm. मुझे सब it was a law firm. And I was very happy. और मैंने उनको अप्रिशिएट भी किया कि सर ये बहुत अच्छा लिखा आपको. तो बोला कि ठीक है ना, डिस्कस करने हमारे पास आ रहे हो तो गूगल का नॉलेज साइड पे रखो. गूगल इज देयर, ओके, इंफॉर्मेशन इज देयर. ठीक है. सो दिस प्रेजेंटेशन, ओके, this short presentation I have just ended, okay, with the. Can you all see the presentation? No, we can't. You can't. Okay. वो थोड़ा glitch आया है मुझे थोड़ा. See, technology में glitches आते रहते हैं. So we have to work with it. Now is it visible? Yeah, now it's coming. Okay. So with this amount of थोड़ा forgiveness मुझे भी दे दीजिएगा अगर मेरी mistake हो गई है तो. So it has to be correct in time. This is this, and अभी ये तो हम लोगों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा कि करना मतलब होता क्या है. These are the things which are there. अभी आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो आपने बहुत बताया हमको, ये सब बताया, ये तो हमको पहले से पता है. अभी इसका आगे का क्या, इसके आगे क्या. तो जैसे ब्रह्मास्त्र में क्या हुआ, शिवा आया पहले, अभी शिवा के बाद पार्ट 2 भी आने वाला है ना. तो वैसे पार्ट 2 देखते हैं हम लोग. अभी we are just around an hour or so in our presentation, so we'll take up solution also. So solution मेरा ऐसा है, I'm just opening an application. Yeah. And that is always say, if you know the exact problem, solution becomes easy. जब तक आप define ही नहीं करते हो कि issues क्या है, आप क्या solve करोगे. वरना बेन एब्सोल्युटली राइट. ये जो क्वेश्चंस मैंने जो नरेट किए ना, अभी हम लोग वी आर अराउंड 45 मिनट्स इन माय प्रेजेंटेशन. और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस हम लोगों ने लिटरली मैंने और मैनेजमेंट ने मिलके डॉक्यूमेंट किए थे. क्योंकि कोविड में क्या सब फ्री बैठे थे, तो ये डॉक्यूमेंट किए कि डॉक्यूमेंट करो पहले. तो डॉक्यूमेंट एट द हाईएस्ट लेवल एंड एट द टेक्निकल लेवल हम लोग ने बैठ के, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ बाय फ्लूक या कैसे भी, लेकिन हूँ, तो उनको लगा कि इसको देते हैं काम, थोड़ा समझेगा हमारी फॉर्म के बारे में, तो ये अच्छा सॉल्यूशन दे पाएगा. It's a good combination. See, when a chartered accountant works with the technology, एक तो finance brain है, accounts brain है, और technology को आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो. I think it's a win-win situation for the management as well as you also enjoy doing the work, you know. Yeah, thank you. So now I'll just open my जो हमारा ये जो भी डिस्कशन हुआ था उसका एक हमने उसका एक प्रेजेंटेशन जैसा तो नहीं था, लेकिन मेरे पास एक हमने डॉक्यूमेंट बनाया था, दैट आई एम शेयरिंग विथ यू. पीपीटी आई एम स्टॉपिंग एट प्रेजेंट. You all can ask questions from your own offices, your own experience. I am not only here to teach someone something, but at least you can do some good for the profession. One second, I'm just trying to open my Word file. See, is the Word file open? Is the Word file visible to you all? हाँ, देखा है. देखा है. खाली थोड़ी मोटी लेनो आम नहीं करूँ छुपर बने नहीं देखा. मैंने देखा है ड्राफ्ट डिस्कशन वर्जन 1.0. या ये तो वर्जन ठीक है ना.
I'll just stop the share first. Okay. Because there are too many programs open on my system. I must close few. With the invention of technology, you will believe all the members, I think out of so much we asked for, everyone was wanted the virtual one, you know. Mhm. 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा आने जाने का, everybody wanted to save on, you know. You won't believe, but few friends of mine wanted to be physical. नहीं, And I was also eager. I was also eager. I Yeah. will love to, मतलब हम तो बोरेली स्टडी सर्कल कल मिल ही रहे physically, but coming from here to Bandra was little taxing. Borivali to Bandra, that's what I'm trying to tell. Okay. No problem. See, now the clients के साथ हमारा जो discussion हुआ. So this I'm just narrating to you all as a storytelling. Okay. So whatever mistakes it happens, it's completely my mistake, and we will try to correct it out. Okay. See, the draft key feature useful to a CA firm in your size, like sharing of documents and folders. So cloud storage files can be easily shared. The files can be shared back and forth with the team members. Shared files. So this is the solution which is for that particular firm. So, but we can draw some conclusion for our kind of a firm, and then we can replicate it. And then we have to just fix and mix and match, and try to use the best things in our firm. Okay. So these files can be shared back and forth, and the shared files get automatically synced to the data folder on each person's computer, or can be accessed via web or a mobile app. It is more convenient and easy way to show than the email back and them. So घड़ी जो emails करते रहते हैं, which was the last file, version files, so that can be eliminated. That when you have a Microsoft 365 or Google Drive, in that there are the versions which have been stored, versions and with the usernames and which user had stored last, and which are the users which are actually using it right now, live use kar rahe hain. Okay. While sharing, the following features are available, like choose with whom the file is to be shared, prevent others from sharing. Means if I have shared, say for example, I have shared with Murtuza ji and Vandana ji, then these two files, Vandana ji and Murtuza ji, I can restrict not to be shared with Gaurav ji. Okay. So this kind of things which can be done, it cannot be done on your drive level sharing. It is difficult. Okay. You have to implement few more things for more controls, which is obviously costly also, and it comes with a cost, and to maintain the same with a cost. Then set permission to allow restrict people to edit, download, print, or copy the file. Like where we have done this implementation, what happened is now client phone करके पूछेगा नहीं या मेल करके पूछेगा नहीं, क्लाइंट का फोल्डर क्लाइंट के पास एक्सेस है. अभी फॉर एग्जांपल मेरे क्लाइंट है vandana@vandanadodia.com, उस ईमेल आईडी पे मैंने एक्सेस दिया हुआ है, एंड उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा. तो लास्ट 3 इयर्स का डेटा उनको, अगर उनका ITR-V चाहिए, उनको अगर उनका कंप्यूटेशन चाहिए, व्हाटएवर 3B का कॉपी चाहिए, व्हाटएवर कॉपी दे रिक्वायर, तो वो सारी चीजें वो खुद ही ले सकते हैं विदाउट आस्किंग एनी ऑफ माय टीम मेंबर. मेरे इंटर्न का भी टाइम क्यों बिगड़े? मतलब ये सारी चीजों से करते हुए हम लोग ये इतना सिमुलेट कर सकते हैं. ऑब्वियसली देन यू आल्सो नीड द क्लाइंट टू बी ट्रेन्ड इन पर्टिकुलर वे कि भाई देखिए आपके पास ये ईमेल आईडी है, ये लॉगिन कीजिए, एंड देन you get the things download which has been shared to you, because majority of the users may be using Gmail as their email ID provider or Microsoft 365. Okay, so Android phone होगा या Apple phone होगा, और दोनों में ये features available है, ये use कर सकते हैं, and it is tried and tested. हाँ, 10% लोगों के लिए नहीं है, लेकिन 10% लोग जो है वो इतने पैसे वाले होंगे या इतने रिसोर्सफुल होंगे कि वो उनका खुद का ही बना लेंगे. करेक्ट. एंड आई हैव सीन even the larger organization, larger meaning I'm saying multinationals to the tune of 140 countries में भी ऑपरेट करते हैं ना, वो लोग भी खुद के सर्वर्स, खुद के डेटा सेंटर्स नहीं बनाते हैं. They also hire the data center services. Okay, they have their in-house engineers, they have their in-house IT team, but they keep the best things from the best people. Okay, they just hire. IBM से ले लेते हैं, Amazon वेब सर्वर से ले लेते हैं सर्विसेज, डेडिकेटेड लेते हैं, शेयर्ड नहीं लेते हैं, शेयर्ड सर्विस नहीं लेंगे वो लोग.
कि भाई हमको शेड नहीं चाहिए, we will go for the under contracts and the service level agreements are drafted in such a way that it is their own, but they are getting at the best of the best resources they are getting, and that too 24/7. Set permissions to allow and restrict the people to edit. अभी जैसे हमारे क्लाइंट है, अभी सिंधु वंडा मैडम हमारे क्लाइंट है, तो क्लाइंट है तो उनको हमारे डेटा में एडिट करने का राइट देने की कोई जरूरत ही नहीं है। उनको क्या होगा, हमारे से हमेशा चीज लेनी होगी उनको। हाँ, if she has pass on the information, then we can definitely create a folder, and in the drive level encryption and drive level protection, we can definitely design in such a way that this can be done for a particular limit size कि 100 MB का आप डेटा अपलोड कर दीजिए आपके यहाँ से, हमको भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या तो एक लिंक प्रोवाइड कर दीजिए, लिंक हमको डाल दीजिए। There are applications available. We transfer, we are freely using it, right? Up to 2 GB data can be transferred. हाँ, वो लिंक 7 days के लिए लिमिटेड होती है, but we have done audits using all these things in the pandemic time, so we are all set for using it. Then give permissions for a limited time. अभी मुझे किसी को टाइम देना, अभी जब वी ट्रांसफर तो एब्सोल्युटली मैं सीखा उससे कि भाई वी ट्रांसफर क्या करता है, आज एक लिंक दे दिया, 2 TB तक डेटा मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, किसी को भी दे सकता हूँ लिंक क्रिएट करके। नाउ वो 7 days में उसने डाउनलोड नहीं किया, वो लिंक ही एक्सपायर हो जाती है, ही कैन नॉट। एंड द सेम वे we can also do in our own computers. Okay, 1 महीने में आप डाउनलोड करके ले लो, या तो इसको उल्टा समझ लीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप 1 महीने में पैसा देके डाउनलोड कर दीजिए। Okay, these all things can be commercially exploited by people like us because we are all small and medium firms, and collections is very very difficult for us क्योंकि हम एक काम में से खत्म नहीं होता और दूसरे काम में लग जाते हैं और दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, एंड इट कीप्स ऑन वर्किंग वर्किंग वर्किंग। अभी टैक्स ऑडिट का सीजन खत्म हुआ, कंपनी ऑडिट के बाद उनका एमसीए का काम, एमसीए के काम के बाद बोर्ड मीटिंग, एजीएम, ये सब फाइलिंग, आरओसी, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। थोड़ा समय मिलेगा तो आरआरसी में जाके आएंगे और उसके बाद वापस मार्च चालू हो जाएगा, एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन। ऑल दिस थिंग्स आई कीप ऑन नोटिसिंग बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म। Then the important thing is a simultaneous working. In an in-house server, this becomes really difficult unless and until you have your own Microsoft 365 and you give simultaneous working का collaboration का rights दिया हुआ रहेगा. What this do, that 2 people at the same time shared storage के अंदर they can work upon a single file. And when they, अभी ऐसा भी होता है कि एक्सेल के कोई एक सेल के ऊपर मैं भी हूँ और मेरा अदर काउंटर पार्ट भी है, तो वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करता है कि हाँ ये सेल के ऊपर ये है। So these all features can be used. See, the co-author document simultaneously one and prerequisites a shared storage area. Microsoft offers OneDrive for business, SharePoint, and even Google also offers the Google Drive. So see, these are the 2 giants of the technology, Google and Microsoft. So whatever Microsoft will give, Google will come out with it. Whatever Google will give, Microsoft will come out of it. So you just have to be with some kind of an ecosystem. Okay, कि आप Microsoft के साथ रहना चाहते हो, you are comfortable with Microsoft, then be Microsoft. Features आज न कल तो आ ही जाएगा, नहीं तो थर्ड पार्टी यूटिलिटी तो होती है जिसमें वो काम हो ही जाएगा। Then फॉर्म्स वगैरह यूज कर सकते हैं, हम लोग सीए फॉर्म्स वगैरह भरने के लिए यूज करते हैं कि जो फर्स्ट टाइम क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हैं, तो वी जस्ट गिव देम द केवाईसी एएमएल का डॉक्यूमेंट। द वे बैंक ऑपरेट्स, बैंक में जाते हैं तो कुछ ना कुछ भी करना होता है, तो वी जस्ट हैव टू फिल द फॉर्म, or nowadays we have to fill the form online. So similar way, we are a firm, okay, where we are being governed by Chartered Accountancy Act, and we need to maintain some kind of KYCs of our clients and everything. We can design the forms. We can have a form filled in by themselves by sending link from our office. They fill up the form, and few mandatory things, few optional things, and few things where attachments needs to be uploaded in JPEG or PDF. We can design, and it is very simple, my friends and all the members. It is very simple. If I can do, everyone can do. I am not a person with a extra wings or whatever. Everyone can do. It's as simple as that. Only thing is that we have to make technology our friend and not the enemy. जो इसका से डर गए थे हम लोग हमारे टाइम में, मेरे टाइम में तो इसका हुआ करता था। सीनियर मेंबर्स को शायद कोई दूसरा टॉपिक होगा, एंड जूनियर्स को क्या है अभी, आई डोंट थिंक सो इसका उनको है ही, अभी इसका निकाल दिया है, इसका को खिसका दिया उन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं, बट सम और द अदर वे यू हैव टू लर्न, एंड देन यू हैव टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट, एंड इट इज अ वंडरफुल थिंग. And see here, taking feedback for the services provided,
collecting basic information of a new client, collecting responses. So these are all, when you use it Microsoft or Google, it's a very nice things. इतने अच्छे, इसके अंदर सिक्योरिटी पॉलिसीज भी है ना, हमको नहीं बनानी होती है. The way I started from 17, all this thing, I came to know that मुझे इतना इंग्लिश में draft, I don't have to do all this drafting. The basic things they keep on giving. It is same like live-in license agreement, which is being nowadays automated process हो गया है उसमें भी. You just have to have a camera and a fingerprint scanner and a Aadhaar card. अपने जो real estate client होंगे या agents और consultants होंगे, वो लोग वैसे ही तो करते हैं. फिंगरप्रिंट स्कैन कर ली और एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो गया. आपको सिर्फ आपको बताना आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है, आपका व्हाट यू से रेंट क्या है, डिपॉजिट क्या है, और जो आपकी एक पर्टिकुलर आपकी कंडीशन है वो आप डाल दीजिए. बाकी का सब स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाता है. You don't need to go to advocate also. Okay, so this kind of things are being getting automated. तो जो security policies होती है, पहले security professionals होते थे, you used to draft it. Okay, you just read through it. For a small and medium size of a firm, I don't think should be required. Because अगर Microsoft वालों ने draft करके रखी है as a template, why don't we use it? Use free of cost. We just have to use a user license fee होती है, that we can use it and keep it for ourselves. Then popular options available for cloud collaborations are, see these are just, it was very new to that particular firm during that time. So G Suite है, Microsoft, G Suite तो उनके पास already था, but उनको मैं Microsoft से भी, I was trying to make them understand कि Microsoft में भी ये सारी चीजें हैं. It is not only Google, but Microsoft also provides some limitations, because all the technology comes with a limitation. Obviously, कि हर एक की limitations होंगी. Cloud-based apps over a browser using your internet may have lesser features compared to the desktop apps. But अभी Microsoft 365 आपने install कर दिया है system पे, then it will have a more number of features. But if you just go to the Microsoft.com and try to log in with Word or Excel file, then it will have some restricted usage. You may not be having the what you say power pivot feature and all that thing on the internet-based application, but you have to have on a desktop level software so that you can do extra work. But general work, I'm telling you, 75 to 80% of the work can happen on the online also. It is just a critical work which a person of a partner level person or a very critical thing, but a senior level person has to intervene. वो 20% काम होता है. Pareto principle सबने समझा हुआ है. Okay, correct, 80-20 rule. Okay, so that's what I'm trying to tell you. Certain features like ActiveX and macro and all that thing will not work. That has to be done through your system itself. Like जो utility होती है, जैसे e-invoice आ गया है, last 2 साल से e-invoice अभी place है, तो उसके लिए जो utility है, that you have to run through your own computer's Excel, not from the cloud. Okay, then Tally also can be installed on a server, virtual private server. You can do it, and Windows VPS के थ्रू भी कर सकते हैं. जैसे अभी वंदना जी ने बताया कि हम लोगों ने ये सब फीचर्स इन हाउस कर दिए हैं. VPN लगा दिया उन्होंने, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क लगा दिया. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो VPN आते हैं, it comes with an inbuilt firewall features also. What you say, the features which are there in the inbuilt under that VPN, if you go for a good quality VPN, all the major, आपको अलग से firewall लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. It is inbuilt. For our kind of a firm setup, like 50-100 लोगों की टीम साइज होगी ना, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, अगर आपको फिर हाई लेवल फायरवॉल लेने हैं, Fortinet है, Sophos है, जो absolutely high level things. Okay, हाँ, when your team size is beyond 500, obviously that you have to invest that much, because you will be having that much resource, capital and everything, okay, to spend on those things. Because those firewalls comes for a 7.5 lakh of hardware and 3 to 5 lakh rupees on a maintenance also on a 3 years basis I'm talking about. So ये एक मैंने जनरल एक समरी बनाई है. ऑफिस प्रीमाइसेस में होगा या क्लाउड पे होगा, तो क्या कंपैरिजन है, व्हाट इज, दिस आर जस्ट व्हाट यू से, इट्स डोंट टेक मी एग्जैक्टली, इट्स अ नेगोशिएबल. कौन सा सर्विस प्रोवाइडर कैसे देता है, आप खुद करना चाहते हो खुद कर सकते हो, इट्स नॉट बिग डील. ओके, सो ranging from 3,000 to 10,000 per month. VPS stands for virtual private server. Okay, so for the people who are not that much tech savvy, एक simple चीज बता देता हूँ. If we cannot afford to buy an office in Mumbai, then what we do? We rent out. Correct? So this is private servers वही है और कुछ नहीं है. हम खुद का सर्वर नहीं खरीद रहे हैं. हम लोग को 3-4-5 लाख रुपया खर्चा नहीं करना है. एसी नहीं लगाना ऑफिस में, नहीं लगाइए. वेंटिलेशन नहीं करना, इंजीनियर नहीं रखना. We can hire virtual private services की
पोस्टिंग चार्जेस वगैरह दे के हम लोग ले सकते हैं. इट इज जस्ट एज सिंपल एज दैट. कॉम्प्लिकेटेड करके रखा हुआ है इंजीनियर लोगों ने, वीपीए से बड़े बड़े नाम दिए, jargons. You just keep jargons away. Okay, it's simple as that. खुद की ऑफिस नहीं खरीद सकते हो तो खुद का सर्वर नहीं ले सकते, हमको नहीं इन्वेस्ट करना है, विल गो फॉर अ रेंटेड थिंग. तो ये रेंटेड चीज है. ठीक है. देन कंकरेंट यूजर्स कितने यूज कर सकते हैं. टैली का ऑब्वियसली फेयर यूजेज पॉलिसी है, 10 यूजर तक के लिए देते हैं वो लोग रिमोट एक्सेस ऑन अ मल्टी यूजर लाइसेंस. इफ इट इज ऑन योर ओन सर्वर, ऑन योर ओन इन हाउस, you can go up to 50 also, not a problem. But when you migrate to the virtual server, then they restrict fair usage policy बोलते हैं उनकी 10 users तक मतलब देते हैं. Any questions, please be free to ask. Unmute yourself and please ask. Okay. मैं तो बोलते ही जाऊंगा, नहीं तो मैं रुकूंगा ही नहीं, ऐसा होता है. Okay. The software vendors, which few vendors are there. See few things I see AI and the professional development committee, which makes us breathe. Okay, तो थोड़ा बहुत सस्ता करवा देते हैं, जैसे टैली का कॉस्टिंग. इवन वंदना मैडम विल टेल अस दैट हाँ भाई ये हुआ था अराउंड 31st में, रेट्स सब्सटैंशियली डाउन कर दिए थे हमारे लिए कि भाई आपको एडिशनल लाइसेंस चाहिए, आपके आर्टिकल के लिए चाहिए था, तो आपको टैली रेंटल तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. अभी नहीं मिल रहा है वो, आई अंडरस्टैंड, बट दैट ऑल्सो रेंटल लाइसेंस I think 750 plus GST ऐसा कुछ है. It's very negligible price for the services. Tally के लिए वंदना then will be the right person to comment. Okay, thank you. Okay, so Xbase and XBRL filing softwares, P10 filings. So these are all services which are given. Acha, anyone is using Quickhill antivirus software? You are using Quickhill. So Quickhill. Generally, Quickhill market में कितने का मिलता है and what we get it from the institute? Are you aware that we are hardly getting it for 30% of the price? We are getting it a total security solution along with the mobile scanning. I'm not promoting any product on this platform, but I'm just trying to tell you. Information must be shared to our at least fellow members so that they can take advantage of it. You know, for me also, but my we are having 10 licenses of Quickhill. And Prakash is doing, my brother is doing. So I've never bothered to check the price, but next time renewal, I'll surely make him to go through the, the discount available. But there is a tie-up, so why not to take advantage? Obviously. Right. Correct. Gujarati Bhasha ma kehne, half saved is half produced, penny saved is penny earned. Obviously. And then there are other software also. So this I have taken from few of the materials which are available on the ICAI portal, WRC, CTC, BCS, सब जगह से कंपाइल करके आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ. So टैक्स क्लाउड है इसका फ्री टिल 2 फाइनेंशियल ईयर. पोस्ट बुक्स 3 years के लिए 3 users के लिए फ्री है. पोस्ट बुक्स इज नथिंग बट क्विक बुक्स ऑफ इंडिया. ओके, जैसे क्विक बुक्स यूएस का है वैसे होस्ट बुक्स इंडिया का है. And Zoho books, obviously that is also Indian. Zoho books. Okay. So practice management के लिए cordial. These were all offers which were running till I think December 21 तक सब चल रही थी. ये सारी offers. See, October 20 up to 100 users, firms having users less than. Simplify the practice management software. Okay. So once we have to start using it, then only we'll be able to come to know कि ये कैसे चलता है. Correct. See, unless and until अभी we have never learned how to use mobile phone. You all will agree with me, correct? We have never gone to attend a particular class कि चलो आज मैं मोबाइल सीखने के लिए क्लास में जा रहा हूँ. Never. We started fiddling with the mobile phone. पहले हमारे पास बटन वाले थे, पहले तो हमारे पास वो घुमाने वाले होते थे, वो हमारे दादाजी यूज करते थे घुमाने वाले. फिर हमारे को राइट टाइम में पुश बटन वाले आ गए. इनके पीछे पड़ा है घुमाने वाला, देखिए वंदना जी बता रहे हैं. ओके, वो हेरिटेज वैल्यू है उनका. So then we started using push buttons, and then we migrated to Nokia phones, and Nokia phones are smartphones and all that. So all these things, it's simple. See the cost, what you can see over here. Okay, big firms, the big fours, I'm not talking about them. It is, and my lecture is not for them also. I am small and medium firms के लिए ठीक है. हमारा session का title भी वही है. Okay, so controls in the small and medium firms. So these are the licenses, like G Suite is providing this, Microsoft this, and Zoho Workspace is this.
at least you rely on G Suite and Microsoft. That is the best possible thing, क्योंकि हमारे 80% of the work are getting done on this Word, Excel, PowerPoint. Correct? I'm presenting you with the help of PowerPoint. I'm using this. If you see my screen, this is Paresh Panchal over written here. It's an enterprise license. Okay. And I'm getting benefited out of it. And video conferencing administrative tool. I'm going to show you how it works also on the screen itself live. See, desktop version is available for this. And please feel free by asking me questions कि कौन सा VPN tool use करना है, वो भी आएगा, इसमें आएगा, it will come. But try to be participative. Vandamentu is always participative, I'm aware. Anil છે ને, Anil Makhija from Thana, my friend. Hi, madam. How are you? Ekdam fine. Paresh, you feel free to ask because. Yeah. Paresh bhai, I was just typing only. This Microsoft, this tool, does it allow Excel usage also free of cost? I've been using it, but I don't know about the costing part. One second. Which I'm just scrolling up. Yeah, Microsoft. I came to Microsoft Office. So Microsoft, when you're saying Microsoft, it allows usage of Excel also, license version free of cost in this subscription price. Yes, obviously. Then it is excellent. We all small practitioner must do this. Can I tell you one thing? Can I tell you? Copy? No. Because I am using this Office 365, but my for whom I am using, they are paying the cost. Okay. Then it is excellent. We must all encourage. उसका भी एक थोड़ा बता देंगे ना, how Small multiple office, people can. नहीं, there is a version license called Small Office, Home Office करके आता है ना, वो license आप लीजिए, and it is absolutely available to everyone. See, there are versions. Microsoft 365, Business Basic. आप Business Basic लेंगे ना, तो आपको उसमें सारे tools use करने को मिलेंगे. No, I am using Basic. it. मैं तो यूज कर रहा हूँ उसको. तो हम लोग जनरली जब भी स्मॉल फर्म होते हैं तो वी जनरली टेक अ पायरेटेड वर्जन और वी टेक ओनली होम एडिशन ऑफ ओल्ड एक्सेल ना 365. हाँ, तो उसका यूसेज अगर आप थोड़ा हाईलाइट करेंगे तो दैट एवरीबॉडी कैन बी, इट विल क्रिएट मोर इंटरेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस. सर, आपके पास अगर एक्सेल है, आपके पास अगर वर्ड है, आपका एक्सेल के अंदर फीचर पावर बीआई, पावर टूल्स, पावर पिवोट, ये सारे फीचर्स एनेबल ही नहीं है, बिकॉज इट वर्क्स ओनली एंड द न्यू फीचर्स लाइक एक्स लुकअप, ये एक्स लुकअप वगैरह चलेगा नहीं. Correct. All these things are really time saving. I am not an expert on Excel. मुर्तुजा भाई है यहाँ पे, भाविन भाई है, वो लोग एक्सेल के सेशंस लेते हैं. ओके, predominantly Excel sessions. Okay, वो लोग ज्यादा बता पाएंगे कि if you go for a Microsoft 365 and use Excel in that, then there are so many features which are available. Okay, पहले हम लोग जो पुराने वर्जन यूज करें, just for a 2 minutes, I'm just taking you away to Excel, like index and match function use करके we used to try to arrive at a particular location of the cell. Okay, to arrive to derive at the value in our reporting tabulated form. Okay, now इंडेक्स वाइज थोड़ा टीडियस था. वो खाली एक क्या होता था कि बहुत सारा R&D करने के बाद वो हम लोग वो अराइव कर पाते थे, और वो लोगों को पता भी नहीं था कि इस तरह से यूज करना है, बिकॉज वी लुकअप जनरली लेफ्ट टू राइट रीड करता है. करेक्ट. तो वो एक्स लुकअप के साथ तो ऐसा कुछ है ही नहीं. एक्स लुकअप में वो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब हट गया. राइट सर. ओके, तो दिस आर द फ्रॉम द एनी डेटा सोर्स. आपके पास टेबल है, तो टेबल में से आप कोई भी डेटा सोर्स का कोई भी वैल्यू डिराइव कर लीजिए, और वो हम लोग को तो लगता है फॉर ऑडिट लगता है, फॉर टैक्सेशन लगेगा, व्हाटएवर थिंग्स इट विल बी रिक्वायर्ड, सो इट विल बी रिक्वायर्ड. सो दैट इज, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ थिंग्स. इट इज हार्डली 650 रुपीस पर मंथ पर यूजर, एंड इफ इट इज, आप समझिए अगर छोटी फर्म है आपकी तो आपको इतना कॉस्टिंग नहीं बैठेगा. मुर्तुजा जी देखिए आ गए मेरे एक्सेल के गुरु, हमारे आ गए हमारे साथ. Yes, okay. Can I add something, Paresh bhai here? Please, मैं आपको याद ही कर रहा था. Yeah. Yeah, so as rightly pointed out by you, so certain advanced features, of Excel, even in the latest laptop what we were taking, the home and study license which they give, certain advanced features are not working in that. So they have kept it reserved. So XLOOKUP is there, and some more, functions are not there working in this student version, home and student version, which is there given with the laptop. So even in my laptop, when I purchased a new one, I had to install that Office 365. And yes, when we take this Office 365, business, then we get all these features. Correct. Thank you, Murtuza ji, for enlightening us.
on this. See, I'm just trying to, if you allow me, because Microsoft, we all use it day in, day out. I'm just sharing my one of the browser screen. My words are निकल. Acha, now the screen is visible with the table 125 user per month. Yes, yes. Okay, I can zoom it for you all. Okay. ये देखिए. See, 125 user per month. Microsoft 365 Business Basic. हम लोगों को होम एंड स्टूडेंट वाले वर्जन में नहीं जाना है. अगर हम लोगों को फ्लेवर लेना है तो ऑब्वियसली 125 यूजर पर यूजर पर मंथ वाला लेना है. ओके, दिस विल गिव यू टीम वर्क. सी, ये जो लाइट शेडो किया हुआ है ना, मतलब लिमिटेड फीचर है इसके. ओके, टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन. टीम वर्क होगा, कम्युनिकेशन नहीं है. ओके, दैट वे. देन वेब एंड मोबाइल वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है. ईमेल एंड कैलेंडरिंग. सी, so this is 125 at least for a start using this, and gradually see what version I am using is this right now, Microsoft 365 Business Standard. हमारे लिए as a form 360 rupees per user per month is more than sufficient, and it has all the features. See, it has all the features. इसमें desktop version भी आ गया और Office apps version for PC and Mac. मतलब अगर आप Apple भी लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. Okay, so this is the things. And threat protection and mobile device management. These are two only are available with this enterprise or a premium version. Okay. लेकिन वो फिलहाल ना भी लेते हुए, at least for a start, you start using this 125 per user per month. This will really help you out a lot for doing day-to-day activity. One second, we'll come back to our main topic per se. Just थोड़ा digress हो गया मैं. Then the software tools which we use for controlling the things like Microsoft Teams for the collaboration tool, Slack, Discord, Chanty, Zoho Workspace. अभी मैं हर एक सॉफ्टवेयर का तो आपको एकदम फ्लेवर तो नहीं बता सकता, but at least you understand that these are the collaboration software. Then there are practice management softwares. We as a small CA firm, हम लोग practice management software use करते ही है सब लोग, लेकिन उसको हम Excel का नाम देके रखा हुआ है, तो वो Excel में डाल देते हैं. जो भी करना है हम Excel में डाल देते हैं. या फिर हम लोग अगर ओल्ड स्कूल वाले हैं तो हम हमारी एक डायरी मेंटेन करते हैं. ओके, सो दैट वी यूज इट. सो व्हाटएवर वी यूज इट, बट वी यूज इट इन अ सिस्टमैटिक वे. हमारे पास गूगल कैलेंडर भी है, हमारे पास आउटलुक कैलेंडर भी है. इट इज अ रियली नाइस यूज. अपने इसके अंदर अपॉइंटमेंट लेंगे एंड वी व्हेन वी से कि हु इज गोइंग टू कम, द RSVP एंड ऑल दैट, इट रियली गिव्स अस एन एज. अगर हम क्लाइंट के साथ भी इस तरह से डील करेंगे, क्लाइंट को भी लगेगा कि यस, दिस पीपल आर प्रोफेशनल फर्म and these people know how to work and how to give the services. And from the हम लोग जो annexure A में देखा था, वो Google Forms, उसके बाद एक feedback form जाता है कि how did you like the services and all that blah blah blah. फिर सामने अगर आप 25,000 का बिल कर रहे हैं, आप 35,000 का बिल करेंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगा. You will be able to, मतलब अल्टीमेटली तो बाप भरा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. We all agree in that, correct? Chartered accountants, finance people, right? So CA dashboard है, CCH iPhone is a very very expensive tool. अभी आपको ये बताऊं तो लास्ट वन, द जामकू हमने यूज किया है. ये हमारे आदर्श पदरीचा है ना, उन्होंने बनाया हुआ है. ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज अ यंग गाय. उन्होंने ये बनाया हुआ है जामकू. वेरी नाइस सॉफ्टवेयर, मैंने यूज किया हुआ है. फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था हम लोगों को यूज करने के लिए इनिशियल टाइम में. टू CAs जो जिनके पास 5 से कम यूजर्स है ना, उनके लिए फ्री दिया था. आई एम स्टिल यूजिंग इट. Wonderful software. He has come up with a IT practice management, income tax, जिसमें आपको नोटिस मैनेज करनी है, IT के डेट्स मैनेज करने हैं, कमिश्नर के डेट मैनेज करने हैं. बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना हुआ है. एट अ डॉट चिप प्राइस उन्होंने बनाया. मदरेचा सॉल्यूशंस करके उसकी फर्म का नाम है. उनके फादर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी वाइफ भी CA है. देन फिनविल ये है. सो इट्स वेरी वेरी नाइस थिंग. सी, एवरीवन गिव्स अस व्हाट यू से, एंड दिस इज द राइट टाइम, स्लाइटली व्हाट यू कैन से रिलैक्स टाइम फॉर अस from December to mid of March, where we can take up this kind of task at our own thing, and don't rely on your juniors to take a decision. Your firm, your decision should be the final, and you should be, you take a flavor from them कि ये क्या use करते हैं आजकल, उनको क्या पसंद आता है, because ultimately they are going to do execution task. उनको ये सारे tools देते हैं ना, they are so fast to adapt to this, and they will not like to, आप अगर बोलेंगे लिख के लाओ, ये करके लाओ,
They will never like it. Okay. Give them the space. Give them the space. They will enjoy all these things. उनको ऐसा कर दिया ना, उनको जितना कम बुलाओगे कैबिन में और कम पूछोगे ना, उनको अच्छा लगता है. हाँ, लेकिन उनको व्हाट्सएप पे पूछो, बहुत अच्छा लगता है उनको. They like it. They seriously like it. Okay. Hi, how are you? बस. और उनकी थोड़ी टर्मिनोलॉजी भी सीख लीजिए थोड़ा बहुत. करेक्ट. दैट वे. टिकटिंग टूल्स. ये टिकटिंग टूल्स है ना, मैंने खुद भी ट्राई किया था अपनी फॉर्म के लिए. आई कुडंट क्या बोलते हैं, सक्सीड तो नहीं हुआ, बट टिकटिंग टूल्स इज लाइक, जब भी आप कोई भी कॉल सेंटर में कॉल करते हैं तो एक टिकट मिल जाती है आपको. सो दैट जोहो आई हैड ट्राइड, लेकिन मेरे क्लाइंट लोगों को इतना पसंद नहीं आया कि वो हमको डायरेक्ट इंटरैक्ट करने का होता है. सी फॉर टेलीफोनी और वो सब के लिए ठीक है, वो लोग सब डायरेक्ट इंटरैक्ट करना चाहते हैं, वो लोग अपना आवाज सुनना चाहते हैं, हमारे से मिलना चाहते हैं, चाहे वो जूम हो तो चलेगा, बट not anything else. So that didn't work. I tried, and I'll tell you, I had used QuickBooks in 2013. Failed miserably. Even after having technological knowledge, everything, still I failed miserably. Reason, QuickBooks was working on an internet. The platform was internet. 2013, many parts of India were not having internet, electricity. Internet to dur ki baat hai. Then comes in 17, Jio ka transformation hua, and everyone started getting internet in their mobile phones. 4G aa gaya. 4G mein sabka speed bhi badh gaya, and internet was available to everyone. Tom, Dick and Harry, apna sabzi wala bhi internet dikhta hai. Okay, तो वैसी चीज हो गई. Then that time when I again implemented QuickBooks in my office, it got succeeded that time. But that was a problem. In 13, Paresh was only there. In 17 also, Paresh was only there. But the problem was the internet. Internet was not having. QuickBooks बाहर की कंट्री में बहुत अच्छा चलता है, यहाँ पे नहीं चलता. रीजन है भाई, हमारे यहाँ पे इंटरनेट के इलेक्ट्रिसिटी के बंदे हैं, तो हम लोग नहीं सोच सकते. But now it is stabilized. Unfortunately, from now this year, QuickBooks is out of India. QuickBooks ने टाटा बाय बाय बोल दिया इंडिया में, because they were not able to sustain to the giants like अभी वरना में तो बैठे हैं, टैली के सामने नहीं टिक पाए क्योंकि उन लोगों का सपोर्ट डेस्क और वो सब नहीं था. So all these things keep on happening, but you have to keep on trying. Then password management tools. LastPass is I've used personally and sufficient to help you out, and it can be used on your mobile phone also. Project management is Trello. Trello is absolutely free. I've used it and I'm still using it. पैसा नहीं देना है ना, मतलब आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट में ना, पैसा नहीं देने का, खर्चा नहीं करने का, फ्री ऑफ कॉस्ट. Trello is free of cost. Your Google Calendar, that is also free of cost. That also you can use it. VPN service provider, like अभी मैम यूज कर रहे हैं, वंदना जी VPN यूज कर रहे हैं. आप कौन सा वाला VPN यूज कर रहे हैं मैम? हाँ, इंजीनियर ने पूछવું પડશે, કમલ ને બનાવીને આપી દીધું, પ્રકાશ ને ખબર છે. अरे बाप रे. ओके, देखिए मैडम ने कैसा आंसर किया, मस्त एकदम, कि वो तो इंजीनियर को पूछना पड़ेगा. आउटसोर्स, कंप्लीटली आउटसोर्स. So these are obviously. I agree. I don't recollect, but something is there, but મને એક્ઝેક્ટ નામ યાદ નથી, તો ખોટું કેવું એના કરતા મને નથી. No, I understand. It is tricky things, but ठीक है, आपने implement कर लिया, that is perfectly fine. Then document scanning and mobile scanning app. कैम स्कैनर सबको पता है कि नीचे लिख के आता है. आजकल तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी कैम स्कैनर यूज करते हैं. नोटिस के नीचे लिखा होता है स्कैन्ड बाय कैम स्कैनर. They don't even pay 100 rupees. Paresh, I had a query. What exactly password management tools and where you will be implementing and why? These are the best practices because there are so many passwords to manage. Correct. I have tested LastPass. Others I have not tested. LastPass is good. What exactly it will do it? One repository you will be parking all the one use. Suppose one client. એનું GST નું પાસવર્ડ, ઇન્કમ ટેક્સ નું પાસવર્ડ, TDS નું પાસવર્ડ, 3 login ID. Yes. So that will be stored at one go. You will be able to get it. Okay. Yes. Something and not only for one client, it will be for your n number of clients, and you will be having only one password to remember. You just remember one password, you get to access to all the passwords of all the clients. Nowadays, suppose I am using Winman software. So software itself has a repository of the password. So there, yes. Stored. You can export the password, you can change the password. So obviously. Not going to this tool. That gets exported to Excel also. They have their in-house tool. Entire all the clients' password you want to export, it exports in Excel, and you can maintain in the Excel sheet also.
You can take it to your Google Drive. I Also. think MIS reporting also, where Yeah, they have very much. the whole Yes. information comes, you know. Yes. So these are the few guides to set up VPN. See, VPN, setting up VPN, you require little bit of technical knowledge to set up. The people who are from the information systems audit group, ISA groups, they must have learned this at their academic level. Okay, they must have learned also. When they open the page of the VPN, they will understand कि ये कहीं पे सुना था. Like वहाँ पे लिखा होगा DMZ, तो demilitarized zone करके होता है. तो DMZ का हम लोगों को वो क्या बोलते थे, MCQ में questions भी आते थे कि what does this do. तो वो सारी चीजें यहाँ पे आती है. And as a matter of fact, I'll tell you, most of the chartered accountant firm, any chartered accountant firm छोड़ दीजिए, any professional firms, whenever they buy the router, they don't even change the default password. That is known to everyone. So that is the biggest control weakness. Okay, you have to change the password. You have to change and set up the IP as per your choice. I have the PPT if the time permits. No, तो IP का बताता हूँ मैं आपको, छोटा एक glimpse देता हूँ. But don't keep default. Don't keep default IP addresses. हर एक के ऑफिस में मैं देखता हूँ ना 192.168.0.1. इनफैक्ट मैं मेरे डीसा के क्लासेस करता था, आई थिंक 2013 में. तो वहां पे मेरे पास नोकिया फोन था, उससे मैंने हैक कर लिया था. प्रोफेसर राउटर टेस्ट कराने को लाए थे, वो मैंने हैक कर लिया क्योंकि मुझे पता था कि इन्होंने तो दिखाने के लिए लाए हैं. और फिर मुझे क्लास में खड़ा कर दिया सबके सामने कि ये बदमाश बच्चा है करके. ओके, तो वैसे होता है. तो इट्स एटलीस्ट चेंज, प्लीज चेंज. एंड देयर इज अ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग. अगर बाकी कुछ चेंज नहीं करते तो वो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तो बंद करो प्लीज. हाथ जोड़ के बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग बंद करो और गेस्ट का एक्टिवेट करो. आप सब लोगों के राउटर में, सबके पास वाईफाई है, एवरीवन यूजेस वाईफाई. आई नो कोई वायर्ड पे पूरा फॉर्म नहीं चलाता. डेस्कटॉप्स वायर्ड पे चलते हैं, लैपटॉप्स वायर्ड पे नहीं चलते हैं, क्योंकि आजकल तो लैपटॉप्स ऐसे आ गए हैं जिसमें RJ45 कनेक्टर ही नहीं है. मतलब कहाँ पे आप लगाएंगे वायर, जो जैक होता है ना नेटवर्क कनेक्टिविटी का, RJ45 वो लगाने का कनेक्टर ही नहीं है. हार्डली 2 USB ports. Okay, and laptops are getting slimmer and smaller. So where do you put that? So it is on Wi-Fi. So Wi-Fi router has to be required in the office. 2 Wi-Fis. अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें फर्स्ट फ्लोर पे 2 वाईफाई, 5th फ्लोर पे 2 वाईफाई. ओके, मतलब स्टैंड बाय के लिए 2 वाईफाई इसके लिए रखे थे, स्टैंड बाय के लिए, सो दैट दे कैन इमीडिएटली टर्न अराउंड टू द अनदर वाईफाई यूनिट इन केस ऑफ अ फेलियर. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स प्लीज अगर आपके पास वाईफाई है तो आप ब्रॉडकास्टिंग बंद कर दीजिए, ताकि मैं मेरे मोबाइल में स्कैन करूं. मैं व्हेन आई कम टू योर ऑफिस, चाय पीने के लिए आता हूं मैं आपके ऑफिस में, मैं स्कैन करूंगा तो मुझे दिखना नहीं चाहिए कि वंदना डोडिया का ऑफिस का वाईफाई है ये. मुझे समझ, या तो नाम चेंज कर दीजिए या कुछ भी नाम रख दीजिए. हमारे सचिन डेडिया जी हैं जो साइबर सिक्योरिटी लेते हैं लेक्चर, वो भी सब लोगों को वही बोलते हैं कि गुजरात में जाते हो ना, तारा बापा नहीं दिवाली मीन्स ऐसे ऐसे वाईफाई का नाम लिखते हैं वो लोग. मतलब ऐसे ऐसे नाम लिखते हैं, बधु फोकटिया मुकी दे एक साइड पर, ऐसे ऐसे वाईफाई के नाम. मतलब आप मत लिखिए आपके नाम. जैसे अभी राहुल जी है तो राहुल बजाज एंड कंपनी, तो राहुल बजाज RBJ ऐसा मत लिखिए. डोंट पुट इट दैट वे. जस्ट चेंज प्लीज, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, चेंज इट. क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोग छोटा सा बोर्ड, हम लोग को पब्लिसिटी करना अलाउड नहीं है. हम एक छोटा सा बोर्ड लगा देते हैं ऑफिस के बाहर, सबको पता चल जाता है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है यहाँ पे. ओके, एंड पीपल ट्राई टू स्टील डेटा फ्रॉम यू. वी आर एक्चुअली वल्नरेबल. हम खुद को चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं, बट वी आर द मोस्ट वल्नरेबल. वी आर द टारगेट पीपल फॉर द फ्रॉडस्टर्स. दे ट्राई टू एक्सट्रैक्ट डेटा, क्योंकि हमारे पास जितना अच्छा डेटा स्टोर किया हुआ होता है ना, मतलब एक ड्राइव होगी, उसका पार्टीशन होगा, पार्टीशन के अंदर डेटा स्टोरेज होगा, डेटा स्टोरेज के अंदर क्लाइंट के पूरे नाम बने होंगे, क्लाइंट A, क्लाइंट B, क्लाइंट C, या तो अगर बहुत ज्यादा क्लाइंट है तो अल्फाबेट A के क्लाइंट, अल्फाबेट B के क्लाइंट, अल्फाबेट C. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, होल जितने भी ऑफिस मैंने देखी है उसमें ऐसे होता है. A के डेटा उसके अंदर ABC जो भी है, जितने भी क्लाइंट है उनके अंदर प्रॉपरली ईयर वाइज सॉर्टेड किया रहता है कि भाई ये इनकम टैक्स का डेटा है, ये GST का डेटा है, ये ऑडिट का डेटा है, ये TDS का डेटा है, मतलब प्रोफेशन टैक्स का डेटा है, वैट का पहले का अपील का डेटा है. मतलब मैंने इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज डेटा देखे है ना कि आप पूछिए मत. आप मेरे ऑफिस में भी देखेंगे तो मेरे तो फाइल का नोमेनक्लेचर भी वैसा बना दिया है मैंने कि अगर कोई चीज का एक्नॉलेजमेंट, और इट हैज टू बी प्रीफिक्स बाय AC के अंडरस्कोर.
अगर किसी भी चीज का चलान है तो CHALLAN चलान, तो ऐसा लिखना ही है मैंडेटरी nomenclature, so that the system gets into the place. Now this VPN, see that initially what we buy routers, वो 2-3,000 rupees वाले routers आपको ये सारे ऑप्शन नहीं देंगे, उसमें थोड़े एडवांस फीचर है ना, तो यू टू स्पेंड लिटिल मोर. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 7,000 वेयर इट हैज फर्म विच इज हैविंग लेस देन 5 यूजर्स, उसके लिए वो 7,500 वाला राउटर चल जाएगा. टीपी लाइन का आता है. सिस्को T2 का 20 यूजर्स के लिए है तो 13-14 का लाइसेंस राउटर आता है. और लिंक्सिस का तो सबसे अच्छा आता है, स्लाइटली एक्सपेंसिव, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी टीम साइज कितनी है और उसके हिसाब से खर्चा कीजिए. ओके, स्टार्ट विद द लोएस्ट वन and then slightly start to migrate to the additional feature. Like hardware based, CA firms can buy a router with VPN capability or a firewall with VPN capability. Price ranging is 7,000 to 25,000. And these routers, even if kept 24/7 on, trust me, 3 साल चलते ही है. 3 साल की वारंटी है, आती है सबके साथ, और 3 साल चलेंगे. 3 साल के बाद है ना, उसको मत चलाइए, उसको रिसेट मारो और उसको डिस्कार्ड कर देना, क्योंकि उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है. सम नंबर ऑफ आवर्स उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है. 10,000 आवर्स, 15,000 आवर्स, 20,000 आवर्स. एंड नाउअडेज वी नेवर स्विच ऑफ. राउटर स्विच ऑफ ही नहीं करते. आई एम श्योर मेनी पीपल मे नॉट बी स्विचिंग ऑफ राउटर्स. तो राउटर के ऊपर भी वो जो मैंने बोला ना, वो थर्मल गन, उसको मार के देखो और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर देखो, वो भी गर्म होता है, उसको ठंडे होने के लिए टाइम लगता है. We'll go to the VPN अपना सेटिंग अप VPN कैसे सेटअप कर सकते हैं. लोकेशन ऑफ सर्वर, रैम साइज क्या है, व्हाट इज द SSD, सिक्योरिटी. See, nothing is safe completely because even a VPS can be attacked with a malware, viruses, and DDoS attack. Make sure that either it is available as a part of your package subscribe or it has to be subscribed in a separate way. Okay. Subscribe to your VPS plan online and do set up on your own. If you don't have technical skills, then you can definitely hire your hardware or a network engineer and get it done. This option is good for the CS who are reasonably tech savvy. Future companies like GoDaddy, WebWork, ZNet Live, Mileswap, ये सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो आपको VPS प्लान ऑफर करते हैं at a very dirt cheap price. Here also there is a plan which are shared services वाले होते हैं और एक you are buying your own. Like अभी इसको भी आपको एग्जांपल के जरिए समझना है तो it is very simple that when we are bachelors we don't need a separate everything. Okay, so we can go in a PG kind of a setup कि भाई एक बड़ा सा घर ले लिया, हम लोग 6 लड़के 6 लड़कियां साथ में रहते हैं and we share the rentals and we enjoy the things. तो वहां तक वो ठीक है. But when we have a family then we have to go for a separate apartment kind of a thing. 1 BHK or 2 BHK, whatever. Okay, and that way we have to understand that which kind of a setup we want to go for it. 5 यूजर 10 यूजर के लिए आपको मैं नहीं बोल सकता कि 3 लाख रुपीस का पर ईयर का लाइसेंस फीस देते रहो आप सर्वर का. ओके, यू कैन स्पेंड 50,000 रुपीस मैक्स. ओके, इसके अंदर आपके 10 यूजर तक का काम हो जाएगा. आई एम एब्सोल्युटली श्योर. दिस आई एम गिविंग यू द कॉस्ट विच आर बीइंग available in the market and there are solutions which are available in the market at a good rate. Okay, get services from, see, these are Webtel. See, we are not promoting Webtel, but here also there is Webtel. Because I think Rajiv Khandelwal, he is a chartered accountant. He has formed this company. Okay, he is giving you solution of GST, income tax. और mostly तो मैंने देखा है बहुत सारे chartered accountant की website भी इसने ही बनाई हुई है. Mostly, majority of the people की chartered accountants CA website Webtel is hosting on their own server. Okay, so Webtel is giving, then WFH Pro. Webtel वाला जो देता है वो वहाँ देता है work at home, and that work at home is solution for on premises also, off premises also they are giving. On premises अगर आपके पास खुद का सर्वर है then देखिए ना लिखा है यहाँ पे, our typical VPS for 5 user may start at approximately 3,500 per month. So with GST and all you add up, तो 5 यूजर तक आपको 50,000 रुपए में काम हो जाता है and you don't have to maintain anything. So we are at least at 5:35 now.
I'm just closing this and थोड़ा समय है तो मैं IP के लिए बताना चाहूँगा. Yeah, Paresh bhai is just joining in 2 minutes. Please stay. Yeah, Paresh bhai is joined now. Yeah. Yes, Paresh bhai, welcome back. Yeah, thank you. I was lost in Hmm. the IP address only. I tried to run the Okay. different command. 1 second. Let me just show you and present again. Can you see PPT right now? Am I audible?
Yeah, members, please stay with us for 2 minutes. So I think Paresh bhai will be joining. There seems some technical glitch. Yeah, Paresh bhai has written on WhatsApp some electrical trouble. Apologies. So he's joining back. Yeah, welcome back. Paresh bhai is back. Yeah. Sorry, apologize for the trouble. Some electricity problem. Okay. राहुल जी, मुंबई में भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम. Right. Okay, now the screen is visible. IP address. Yes, it is. Yes. Yeah. सर बैकअप डिवाइस नहीं रखा है आपने. बैकअप डिवाइस नहीं रखा है आपने. ऑफिस में रखा है, घर पे नहीं रखा है. इसको सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बोल सकते हैं हम लोग. वहां पे यूपीएस मतलब इट्स अ गुड लर्निंग दैट आई हैव टू पुट अ यूपीएस ओवर देयर. 2000 रुपए का सॉल्यूशन है, वो लगाओ, एक शेल्फ लगाओ और ऊपर यूपीएस रखो और उसको इंप्लीमेंट कर दो, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो प्रीवियसली प्रॉब्लम यूज्ड टू कम, तो अभी हमारे घर पे और ऑफिस पे सब जगह है. लाइव सेशन हो गया हमारा. ओके, टू मिटिगेट द रिस्क. ओके, ग्रेट. सी, these are the numbers which are being denoted to any computer. 0 to 255 is the range of numbers. Can you make it full screen, Paresh bhai? Acha, sorry. Okay. Presentation on. Is it? Yeah, perfect. Yeah, perfect. Yes. Yeah, okay. Yeah. So here the IP addresses as classification like external, public, private, IPv4, IPv6, dynamic, static, internal. Okay. All these things we have learned in our academics at ISA level. Okay. Even if we have not learned, we have now come to understand that the IPv version 4 is actually going to go over because the limitation is far exceeded and we need more and more IPs. Okay, so that's why we have IP version 6 in place. Internal IP means in-house, whatever your IPs are there in the office, which you give to workstation 1, 2, 3, 4, laptop 1, 2, 3, 4. Okay, that is for your internal IPs. Static IPs, when you subscribe to, say, Tata or MTNL or any of these people, or even for that matter, Jio or Airtel, they also provide you a static IP, which is the IP which is denoted to communicate externally. So that is your external IP or a static IP. Dynamic IP, every time the system restarts and refreshes, the IP gets changed. And it's called the dynamic IP. So generally, dynamic IP, this is just a differentiation. I'm just trying, what I'm trying to point it out here over here is generally, I've seen, I'll just bring out the pointer. Yeah. See, this generally we all professional firms, not even CA firms, architect bolo, engineers bolo, sab log ke yahan pe maine even law firms, company secretary firms, cost accountant firms, I've seen this kind of IP 192.168.0.1, 192.168, 0 से लेके 100 या वैसे ही IP एड्रेस दिए हुए. अभी ये this is very easy for me to guess कि ये IP एड्रेस इसका 192.168.1.21 है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि इसका मेंस राउटर का IP क्या होगा, 192.168.1.1 होगा या 1.100 होगा. I can easily guess. Okay. So why to allow somebody to guess our IP? Correct. It is like we are allowing the fraudster or the imposters, okay, to go through our IP list and all that and try to get into our Wi-Fi router. अभी जो वाईफाई राउटर है वो हमारा सिंगल पॉइंट है जहां से सब कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, सब मोबाइल फोन कनेक्ट होते हैं, सब टैबलेट कनेक्ट होते हैं, टेलीविजन भी कनेक्ट होगा और आईओटी आने के बाद तो सब कुछ उससे ही कनेक्ट होने वाला है. वॉशिंग मशीन, ये वो जो जितना चीज बोलो सब उससे कनेक्ट होगा. तो वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर अभी आपने एग्जांपल देख लिया मेरे यहाँ पे, तो यूपीएस लगाने का 2000 का सोल्यूशन है, मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया है, दैट इज रॉन्ग. ओके, सो कंट्रोल वीकनेस, आप लोग मेरा ऑडिट कर सकते हो. ओके, this so instead of that you go for this is class C IP address, this is class B IP address, and this is class A IP address. You can guess internally है ना, आप कोई भी IP address बनाओ, आपके जो नंबर पसंदीदा है ना, आप आपके IT वाले को बोलो हाँ
वो क्या बोलेगा कि ये मुझे इम्प्लीमेंट करने को मुझे मतलब he will try to say no, but why to say no? वो ऑटोमेटिक करता है, वहां पे भी उसको डिफाइन करना है 192.168.0.1 या whatever, तो उसके मतलब उसको बोलो 173, 172, 175, मतलब just give any number, any random number, what of your choice and note it down. उसको उतना ही टाइप करना है, ओके? तो बाहर वाले को किसी को ये आईपी एड्रेस का पता नहीं चलेगा. ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी वेरी गुड सिक्योरिटी इन योर ऑफिस, बिकॉज कभी क्या होता है ना कि हम लोग हमारे ऑफिस में जब भी क्लाइंट आते हैं तो वी हैव टू कीप आवर गेस्ट एंड अपना ब्रॉडकास्ट सबके यहाँ पे ऑन है, मुझे पता है. मुर्तजा जी भी हाई बोलेंगे इस मामले में कि ब्रॉडकास्ट वो बंद नहीं करते हैं, कि अगर कोई नया कोई पर्सन आता है ना तो उसको ब्रॉडकास्ट ऑन रखता है, तो वो पूछता है हाँ भाई वाईफाई पासवर्ड क्या है, वी हैव टू गिव वाईफाई पासवर्ड टू एक्सेस अवर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड बाय गिविंग दैट वी आर एक्चुअली आस्किंग, मतलब आ बैल मुझे मार वैसी चीज हो जाती है. तो दैट व्हाई टू डू दैट, गेस्ट के फीचर ऑन कर दीजिए, एक गेस्ट पासवर्ड रख दीजिए, सो दैट दे कैन यूज इंटरनेट अप टू अ सर्टेन स्पीड ऑल्सो. उसके ऊपर क्या मॉनिटरिंग हो जाता है गेस्ट वाले के लिए, ओके? वहां पे जाके यूट्यूब पे जाके कोई मूवी डाउनलोड नहीं कर पाएगा, नेटफ्लिक्स से कुछ मूवी डाउनलोड नहीं कर पाएगा, इट इज मॉनिटर्ड. उसको स्पीड भी ऐसा ही दीजिए कि खाली उसको ईमेल करने के लिए रखें, ओके? दैट इज अ गुड कंट्रोल, ओके? इन अ स्मॉल एंड मीडियम काइंड ऑफ अ फर्म, गेस्ट का अलाउ कर दीजिए और एक सिंपल सा आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए, वो दे दो गेस्ट वाले यूज करने के लिए विद द स्लोएस्ट ऑफ स्पीड, ताकि आपका जो मेन रिसोर्सेज है, बैंडविड्थ है, वो उसमें यूज ना हो, एंड यू कैन वर्क इन अ बेटर वे, ओके? और आपका इंटरनल आपका नेटवर्क है ना, दैट इज गेटिंग सिक्योर्ड, ओके? सो दिस वाज आई वांटेड टू शो यू द, कहीं पे आईपी का पढ़ा रहा था तो उसके लिए ये मैंने पीपीटी बनाया था, जस्ट एज अ मैटर ऑफ क्या बोला कि जस्ट मुझे ध्यान में आया कि मेरे पास पीपीटी रेडीली अवेलेबल है. और आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 के क्या डिफरेंशिएशन है, लाइक एड्रेसेस आर 32 बिट्स व्हिच इज 4 बाइट्स इन लेंथ, एंड दिस एड्रेसेस आर 122 बिट्स. अभी इसमें ज्यादा डीप पे मत जाइए, जब ये हमारा 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, सब 10 डिजिट भर जाएंगे ना, तो हम लोग को 12 डिजिट मोबाइल नंबर पे जाना पड़ेगा, सिंपल एज दैट. ये वही चीज है, ये देखिए ये आपका डॉटेड डेसिमल है ना, 192, 149, 252, 76. अभी ये क्या होगा हेक्साडेसिमल में, आपका इतना लंबा आएगा, ओके? दिस इज द डिफरेंस, सो दैट मोर नंबर ऑफ यूजर्स, कंकरेंट यूजर्स, बिकॉज फिर हर एक घर में टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, एवरीथिंग विल बी ऑन इंटरनेट, तो आईपी तो देने के लिए होना चाहिए अपने पास, करेक्ट? सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू IPv4, okay? And this also supports the mobile IP. IPv4 was not supporting the mobile IP, okay? So this is the differentiation, and these are some of the, ये थोड़ा टेक्निकल है इंटरनेट के ऊपर. ये जनरली हमारे ऑफिसेस में ऐसे ही सेटअप किया होता है, एक इंटरनेट है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास हमारे पास इंटरनेट आता है, पब्लिक आईपी होता है हमारे, वो एक मेन सर्वर में कनेक्ट होता है, एंड देन वी हैव अ वर्क स्टेशन 192.168.2.3.4, और जो हमारे पास राउटर होगा ना उसका नंबर होगा 1, ओके? सो दिस एक्चुअली इज व्हाट यू से आस्किंग फॉर ट्रबल. डोंट यूज दिस, यूज एनी ऑफ द नंबर. नो 192.168 वाला ही क्यों यूज करना, कोई भी नंबर यूज कर सकते हो, इसका पैसा नहीं लगता. बाय द वे, व्हेन देयर इज अ इंटरनल आईपी, नो देयर इज नो मनी. व्हेन यू टेक अ स्टैटिक आईपी, डिनोटेड आईपी, प्राइवेट आईपी ऑफ योर्स, उसका पैसा लगता है, जो आप आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बकायदा परचेज करते हो फॉर अ 1 ईयर, ओके? एंड दैट टू इट इज नॉट एक्सपेंसिव, इट्स हार्डली कितना होता है 1800 प्लस जीएसटी, मतलब 2000 रुपए में रहता है वो पूरे साल का. आपका जो मोबाइल टीवी, सीसीटीवी कैमरा वगैरह होता है, अभी वो भी डायनेमिक पे चलते हैं. अदरवाइज अर्लियर आपका जो डीवीआर होता था, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, उसको स्टैटिक आईपी की जरूरत पड़ती थी, सो दैट यू कैन व्यू फ्रॉम योर मोबाइल फोन. बट नाउ दैट वर्क्स ऑन क्या बोलते हैं, डायनेमिक पे चलने लगे. और जो हिक विजन वगैरह जो कंपनीज है जो डीवीआर बनाती है ना, तो डीवीआर वाले खुद का ही एक आईपी लेके रख देते हैं, प्राइवेट आईपी, एंड उसके अंदर से फिर सबको यूज कर देते हैं. बट स्पेसिफिकली अगर आपको चाहिए तो आप एक स्टैटिक आईपी खरीद सकते हैं 2000 रुपीज का, बट आप उस सर्वर को दे सकते हो, या चाहे तो दैट यू कैन गिव इट टू योर सीसीटीवी का recorded unit, so that you need not go to your office also, you can see from your mobile phone. तो ऐसे भी आजकल तो आ गए, मैंने बच्चे से बताया, डीवीआर डायनेमिक पे चल रहे हैं, पहले स्टैटिक पे ही चलते. This is the way it works, and how to find out your private IP. Click on start, select run, type command like cmd, and type ipconfig. It's a simple command, okay? Many of the people might be knowing. अगर नहीं पता है तो आप ब्राउजर में जाइए,
लिखिए www.whatismyip.com in your address bar, and you will get your IP और यूजर का ID साथ में आ जाएगा. सब जोन सिलेक्ट किए हुए हैं, वो जोन के हिसाब से इंटरनेट दिया हुआ है. एपनिक अपना एपनिक के अंदर आता है, इंडिया का एपनिक में आता है, एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर. ओके, दैट इज देयर, अलग जोन दिए हुए. सो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन टुडे, बट स्टिल थोड़ा टाइम था तो मैंने बोला आप लोग डिस्कस कर सकते हैं. एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी सी. दिस आर द मुर्तुजा सर, कैसे होगा ये पीपीटीज वगैरह शेयर करती होती है हम लोगों को? Yes, it will be good if Yes, there's yes, no I- IP. हाँ, IP का अच्छा issue, then you can share. हाँ हाँ, आईपी वाला शेयर कर दूंगा सर. मैं मेरा दूसरा भी शेयर कर दूंगा. I'm telling intellectual property. Oh yeah. नहीं ऐसा कुछ इंटरनेट. If you are ready to share, then Yes, you can why share not, it with them. सर मैंने जहां से भी पिक्चर्स लिए हैं, जो क्लिप्स ली हुई है ना, वो सारे के लिए मैंने क्रेडिट्स दे दिए, नीचे लिख दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर कर देना. आई डोंट माइंड. ओके, सी हाउ टू फाइंड आउट. यहाँ पे भी होता है ये, हाउ टू फाइंड आउट योर व्हाट इज योर प्रॉक्सी सर्वर, व्हाट इज योर ऑन सर्वर, इंटरनेट प्रॉपर्टी कनेक्शंस में जाके देख लीजिए आप क्या है. सिंपल. ओके, and these are the way to get your IP address. I've just shown a few examples how to check. These are some Tor browsers. If you are not technologically that advanced or at least at medium level, then don't go for it. This is for the people who loves to hack and all that. ये उनके लिए है और खुद को बचा के रखने के लिए है. So thank you very much. Any questions per se, please, I'm open to answer questions. I would love to, in fact, answer the query members. Paresh Yeah, bhai, members can who are you there throw, can come on video so you can see and Yeah, get the yeah. comfort. I think we should have this, in all our study meetings, that in the initial few minutes, 10-15 minutes, and towards the end, at least we should see each other, so that personal touch is also there. Because Thank we you. all are so getting used to this virtual thing, and members are preferring, virtual. So as rightly said, we save on time, travel time, and convenience wherever we are. So I think virtual, seeing the count of how people are, opting for physical versus the virtual, so we'll have to get used to this virtual mode. I think more people are not yet ready for physical. I think only very few, as Paresh bhai rightly said, that okay, few are actually willing to come physically. So Yeah, we just true. decided that okay, we'll have it virtually only. Only 4 people So, can meet. so yes, we can see Vandana ji, Vishnu ji, and of course all members. Good to Rahul bhai, and of course Paresh bhai, such a